तो गाइज इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। तो ऑर्डिनरी सेल्स पर्सन आस्क ऑर्डिनरी क्वेश्चन गेट्स ऑर्डिनरी सेल्स। Extraordinary salesperson asks unique questions that interest the customer and increase their confidence in the salesperson and his company's technical capabilities. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो क्वेश्चन पूछने में ही आपकी सेल हो जाती है। तो इसको हम दो प्रकार से कह सकते हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड सेलिंग अप्रोच और एक कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच। तो प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर आप फीचर्स पे फोकस करते हो, ठीक है, कि भी मेरे प्रोडक्ट में ये है, ये है, ये है। और कंसल्टेटिव के अंदर में हम लोग कस्टमर को क्या वैल्यू मिलने वाली है कि सर आप ये कर पाओगे, ये कर पाओगे, आप कितने पैसे बचेंगे, तो उसको क्या मिलने वाला है। प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच के अंदर प्राइस जो है वो की हो जाता है कि कितने का मिलेगा, कब तक दे दोगे। इसके अंदर प्राइस कम इंपॉर्टेंट होता है कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच में। इसके अंदर में प्रोडक्ट बेस में जो वैल्यू है वो डिफाइंड बाय प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। और वैल्यू इसके अंदर में कंसल्टेटिव में डिफाइंड बाय कि कस्टमर को क्या बेनिफिट होने वाला है आप जो भी चीज़ दे रहे हो। क्योंकि हम लोग अक्सर सोल्यूशन बेचते हैं। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच में आ जाओगे तो लोग सीधा आपसे हैगल करेंगे कि ये इतने का, ये इतने का, हमें वो करना ही नहीं है। हमें उन्हें कंसल्टेटिव सेलिंग में ही लेके आना है। सेल्स पर्सन इस केस में ब्रिंग्स लिटिल वैल्यू, क्योंकि आपका मेन चीज़ है प्रोडक्ट, कि भी मैं इससे खरीदूं, उससे खरीदूं, फर्क ही क्या पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड कंसल्टेटिव अप्रोच के अंदर सेल्स पर्सन वैल्यू ऐड कर रहा है उन्हें बताने की कि हम ये चीज़ आपको करके दे रहे हैं, हम इसको इस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे, आपको बिज़नेस में ये बेनिफिट होने वाला है। ठीक है? इस सॉल्यूशन से आप क्या-क्या यूज़ कर सकते हो, क्या-क्या बेनिफिट उठाओगे। तो आप में से जो भी लोग बड़े वैल्यू के ऑर्डर्स क्लोज़ कर रहे हैं, दे आर ऑल इन कंसल्टेटिव सेलिंग। एंड सेल्स पर्सन हियर इज सेल्स मोर बाय वर्किंग हार्डर। ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्ट बेस के अंदर मतलब जहाँ पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कंसल्टेटिव अप्रोच में यू आर नॉट वर्किंग हार्डर, यू आर वर्किंग स्मार्टर। तो इसी पर मैं आपको एक छोटी-सी और एक प्रेज़ेंटेशन दिखाना चाहूँगा। तो गाइज़ ये आप समझ पा रहे हो? इज़ दिस मेकिंग सेंस? येस और नो? एक बार मुझे चैट में रिवर्ट करके बताइए। इज़ दिस मेकिंग सेंस टू एवरीवन कि क्या डिफरेंस है कंसल्टेटिव और प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच के अंदर? ओके, ग्रेट। तो आइए हम थोड़ा-सा इसको और आगे देखते हैं। तो व्हाट इज़ सेलिंग? सेलिंग इज़ टू आइडेंटिफाई, जनरेट, इन्फ्लुएंस अ नीड और वांट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। And if a customer has to buy our product or service, okay, he has to forgo, forget, share और sacrifice, मतलब of course उसको अगर हमारी कोई चीज़ खरीदनी है तो उसको अपना पैसा वैसा देना पड़ेगा, right? And it is very important to have all good reasons why customer should buy from us, क्योंकि स्पेशली आज के टाइम में लोग डरे हुए हैं, ठीक है, कि मैं पैसा खर्चूं कि ना खर्चूं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो कंसल्टेटिव जो सेलिंग है, कंसल्टेटिव सेलिंग जो है, इज़ अ नीड सैटिस्फैक्शन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, कि भी आप ना कैसे उसकी नीड को सर्व कर रहे हो, ओके। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसकी क्या प्रॉब्लम को आप दूर कर रहे हो। तो कोई भी बिजनेस है, कोई भी सेल्स है, एक्चुअल में इट इज़ सॉल्विंग सर्टेन प्रॉब्लम दैट कस्टमर हैज़। तो कस्टमर आपको पैसे क्यों देगा? क्योंकि आप उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो ये 7 स्टेप हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पहले ना एक रिपोर्ट बनाना। कस्टमर अगर आपको पसंद ही नहीं कर रहा है, राइट? तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि तब उससे कोई भी बात करना या आगे उससे कोई भी वैल्यू एडिशन कर पाना मुश्किल हो जाता है, ओके। देन नेक्स्ट इज़ कि उससे कॉन्टैक्ट करना। तो आपने बॉन्डिंग भी कर ली बट आप मिल ही नहीं रहे हो। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो मिलते नहीं हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स को भूल जाते हैं। उससे मिलोगे, बात करोगे तो कहीं न कहीं पे बात निकल के आती है कि उसका एरिया ऑफ प्रॉब्लम कहाँ है। तो उसमें पेन डेवलप करना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कि हाँ, वो बताएगा कि हमें ये दिक्कत आ रही है, हमें वो दिक्कत आ रही है, आजकल सेल्स नहीं हो रही हैं, ठीक है? और हमारे यहाँ पे ये वाईफ़ाई ड्रॉप हो जाता है। तो फिर आप बात करोगे उससे बजट की, कि भी अच्छा ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व तो हो सकती है, उसमें अप्रॉक्सिमेटली ये सॉल्यूशन लगेगा, पर उसका बजट भी है कि नहीं है। देन यू ऑल्सो हैव टू नो कि उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। तो कई बार क्या होता है कि सारा कुछ आपसे ले लिया और एक ओपन टेंडर कर दिया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। एंड देन यू कैन गो अहेड, फुलफिल द रिक्वायरमेंट एंड अगेन यू कैन डू द पोस्ट सेलिंग एक्टिविटीज टू बिल्ड द रिलेशन फर्दर। तो 75% ऑफ आउटकम ऑफ एनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रस्ट एंड रैपोर्ट यू हैव एस्टैब्लिश एज अ सेल्स पर्सन। तो आप देख रहे हैं कि लोग उन लोगों से खरीदते हैं जो कि हु आर लाइक देमसेल्व्स एंड हु फील कंफर्टेबल विद। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि लोग उन लोगों से खरीदना चाहते हैं जो लोग उनके जैसे हैं। इनफैक्ट एडवांस सेल्स टेक्निक्स के अंदर इवन ये भी सिखाया जाता है मिररिंग,
क्या आप में से किसी को मिररिंग पता है? डू यू नो समथिंग अबाउट बॉडी मिररिंग? हाँ या ना? यस सर। तो क्या है सचिन, आप बता सकते हो? सर नॉर्मली क्या होता है, जो कस्टमर की जो वे ऑफ टॉकिंग है और जो उसका बॉडी लैंग्वेज है, वी नीड टू, हाँ। हमें उनके साथ ही अपने आप को मैच करना होता है। नॉर्मली द वे ऑफ ही इज टॉकिंग, वेदर ही इज टॉकिंग इन एनी लैंग्वेज, तो उस लैंग्वेज को पकड़ के हम लोगों को उसी के साथ एक कंफर्ट जोन में लेके जाना पड़ता है कस्टमर के साथ, तो मैं ताकि ना वो। ये अगली बार आपको ट्रेन करूंगा मिररिंग के ऊपर। तो ये थैंक यू सचिन, वेरी गुड दैट यू नो इट। तो गाइस बाकी लोग भी ध्यान से सुने कि मिररिंग एक टेक्निक है, आपको सीखनी चाहिए जिससे कि दूसरे आदमी को कैसे कंफर्टेबल बनाया जाए। तो ये एक तरह से इट इज लाइक अ एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसमें कि आप उसी बंदे की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर लेते हो। ठीक है? तो वो अपने आप से कर रहा है बट उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन क्या होगा कि ही विल इमीडिएटली गेट कंफर्टेबल विद यू। ओके? तो आप नोट कर लीजिएगा, इट्स नोन एज बॉडी मिररिंग। ओके? या जेस्चर्स को मिरर करते हैं हम लोग, उसके जो भी जेस्चर्स हैं उनको मिरर करते हैं। ओके? तो अगेन यू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी आप करते हो उनसे पहले बात करनी जरूरी है। उसके अंदर में अगेन ये तो खैर बेसिक सेल्स की चीजें हैं कि भी व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश, यू हैव टू सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड बी रेडी टू से नो, and be prepared to tell the prospect that you don't qualify to be our client. In case हर एक कस्टमर हमारा कस्टमर नहीं है। ठीक है? तो इनफैक्ट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक कस्टमर हमारा कस्टमर नहीं है। So people buy for only two reasons. Okay, what are the reasons? One is buy to gain pleasure, buy to remove pain. Okay, pain is money being lost, pain is quality of life being eroded. तो आपको ना ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ना पेन एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आप सीधा सेल्स पे अटैक कर दो कि ये सॉल्यूशन ले लो, आपने पेन एरिया आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो पेन एरिया आइडेंटिफाई करने जरूरी है। तो गेन प्लेजर ये मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होता है, बट पेन एरिया आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान है कि अच्छा आपका नेटवर्क ड्रॉप हो जाता है। ओके, आपके यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, तो यानी वॉट एवर इज द रीज़न। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी सिक्योरिटी नहीं है, कल को हैकर आपके यहाँ अटैक कर देंगे। तो क्या वो 3 से 5 पेन एरियाज हैं विच कैन एक्चुअली कॉस्ट हिम अ लॉट ऑफ मनी। और इम्पॉर्टेंट चीज है कि लोग कभी भी खरीदते हैं ना, इट्स ऑलवेज अ इमोशनल डिसीजन। कि व्हाट इज इमोशन, डज एनीवन नो व्हाट इज इमोशन? गाइस, किसी को इमोशन की डेफिनेशन पता है यहाँ पे? मुझे लगता है मुझे लंबी चौड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एनीवन गाइस? अगर नहीं पता है तो नो लिखो आप। अगर नहीं पता है तो नो लिखो, ताकि मुझे ये तो पता लगे कि आप सुन भी रहे हो कि नहीं। सो गाइस, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑन द चैट। सचिन, व्हाट अबाउट द रेस्ट गाइस? अगर नहीं पता तो नो लिखो, या तो यस लिखो या नो लिखो, दोनों में से एक चीज लिखो। सिर्फ प्रशंसा और सचिन ही लगता है ट्रेनिंग के अंदर है, बाकियों को क्या हुआ? गोपाल, तुम कहाँ पर हो? ओके साहेब, समीर, शुभम। हाँ जी सर। हाँ सर। अरे लिखो ना, नो लिखो फिर इसके अंदर। अगर नहीं पता तो व्हाट इज इमोशन? इमोशन इज एनर्जी विद मोशन। ओके, तो एनर्जी जब आ जाती है इमोशन के अंदर, ओके, दैट इज इमोशन। सो दैट इज व्हाई पीपल टेक अ डिसीजन। तो आपको पेन एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं कस्टमर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यू कैन आस्क व्हाट इज द पेन कॉस्टिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, फाइंड आउट व्हाट द पेन इज कॉस्टिंग देम। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये ऑफ कोर्स ये तो एक जेनरिक प्रेजेंटेशन है, बट आपको कंपनी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। और व्हाट हैज बीन डन टू रिमूव दिस पेन, व्हाट वाज द रिजल्ट, क्या वो काम किया कि नहीं किया, उन्होंने पहले क्या ट्राई किया, एंड हाउ कमिटेड दे आर, कि भाई उनको ये प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस क्या है। कई बार क्या होता है कि आप प्रॉब्लम के पीछे पड़े हो तो इंपॉर्टेंट नहीं होती। एंड यू हैव टू बी कंफर्टेबल अबाउट टॉकिंग द मनी। तो जो बजट है, बजट की बात सबसे पहले होनी जरूरी है। अगर बजट ही नहीं है, पता लगा हमने कितनी बार मेहनत करी और उसका बजट ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स। ओके, एंड अनदर थिंग इज दैट कि कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार क्रेडिबिलिटी गैप होता है। सो व्हाट इज क्रेडिबिलिटी गैप? कि वो ना इतने पैसे नहीं देना चाहते, क्योंकि या तो उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं ये चीज़ इतनी महंगी मैं खर्च ही नहीं करना चाहता, या उनको जो बेनिफिट है उसकी क्लैरिटी नहीं है। राइट?
So it is very, very important to close the credibility gap. If the prospect does not tell you their budget, you can say in the past we have done this for this much amount. तो ये बहुत अच्छा हो सकता है. This situation is similar to yours. तो अगर client अपना budget नहीं बता रहा है आपको, तो आप उसको एक वैसे भी आप एक बोल सकते हो कि हमारा ना एक और client था, ठीक है, उनके लिए हमने सिमिलर काम किया था और उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली ये कॉस्ट आई थी. सो डज दिस सूट यू? ओके, तो आप ना और कस्टमर के एग्जांपल लेकर के भी बजट बता सकते हो. तो कई बार क्या होता है, बजट वो खुद से नहीं पता उसको, तो आप खुद एक एग्जांपल दे सकते हो. तो दिस कैन बी अ वैल्यूएबल इनपुट फॉर यू कि बजट अगर उसको नहीं पता तो आप अपनी तरफ से बता सकते हो. ओके, तो सर डज दिस साउंड रीजनेबल टू यू कि क्या इस तरह से काम चल जाएगा आपका? ओके. And then again, identify the decision making process. Ask how do you buy. तो ये तो खैर आपको, खैर ये तो मैंने जनरल ट्रेनिंग आपको पहले भी दे रखी है कि कैसे ये लोग डिसीजन लेते हैं. तो ये बहुत ही क्रिटिकल है. टॉक हाई इन फूड चेन, नो हु यू आर टॉकिंग टू. ठीक है, ये तो सब जनरिक चीजें आ गई. दिस इज ऑल जनरल, दिस इज ऑल जनरल. ओके, ये भी सब जनरिक है. ठीक है, ये छोड़ देते हैं, ये सब जनरिक ही है. नाउ कमिंग बैक टू दिस, मैंने एक वीडियो डाला है ब्रायन ट्रेसी का. एक मैं ये चलाना चाहूंगा आपको, एक दो छोटी छोटी टेक्निक्स और सिखाना चाहता हूं मैं. एक सेकंड रुकिए. Hello, I'm Brian Tracy, and a question that I'm often asked in my hundreds and hundreds of sales seminars is what's the difference between consultative selling and normal selling? Well, normal selling is often called transactional selling. It's like you go up to the newspaper stand, you buy a newspaper, you pay them a certain amount of money, and you walk away. Sometimes we call on customers and we make a sale, and they receive the product or service. Hello, I'm Brian Tracy, and a question that I'm often asked in my hundreds and hundreds of sales seminars is what's the difference between consultative selling and normal selling? Well, normal selling is often called transactional selling. It's like you go up to the newspaper stand, you buy a newspaper, you pay them a certain amount of money, and you walk away. Sometimes we call on customers and we make a sale, and they receive the product or service, and they thank you, and they pay you, and they walk away. A consultative salesperson, however, is different. A consultative salesperson sees themselves as a consultant, and a consultant has certain special qualities that make them different. One is consultants are professionals. They are people who are looking for people who have problems that they can solve with their product or service. Consultants are very focused on results, especially financial results. When I built my network of professional training facilitators worldwide, I taught them that their job is profit improvement. Their primary job is to go into a company and talk to the decision makers and find out how they can use their service to help their company to achieve or improve their financial results. So we say you are financial improvement specialists. One of the things that consultants do is when they look at their clients, they think about their clients in terms of the long term. They see their clients as friends. They see their clients as people that they will work with for months and even years in order to help them to improve their lives and work with their special qualifications. Now, how does a consultant consult? I'll often ask this question. If you hired a consultant to come into your company and the consultant sat there, how do they consult? And after a little bit of thought, people will say, well, they would ask questions. Yes, a consultant is a problem detective. What they're doing is they're asking you questions to find out if you have a problem or need that their special expertise can help you to solve. It's sort of like if you go to a doctor. The first thing that a doctor does is a complete examination. The doctor doesn't recommend a prescription or a course of treatment. The doctor asks you a lot of questions, does a lot of tests, and only then comes back with a diagnosis and says, this is what I think your situation is,
And these are the alternatives that we have to deal with your situation. Consultants also provide customized versus generic solutions. Now, a customized solution means it's what we almost call a co-generated solution. The solution is generated in cooperation with the customer. We don't go in with a solution, we go in and step by step as we get to understand the needs and problems and difficulties of the client, then we start to suggest, well, perhaps we could do this or perhaps we could do that. And the solution that they come up with is completely privatized, completely personalized to that particular company. Their calls in consultative thinking selling are far more interactive. There's about a 70% rule. We say that 70% of the work of a consultant is asking questions and 30% or less is listening. As they go through the consulting process, they provide insights to their prospects and customers. They ask, have you ever thought of doing it this way? Or what if we were to approach it from this point of view? Or did you realize that it's now possible to achieve your goals using this method or this technology? In other words, they don't tell people what to do. They provide insights to demonstrate their expertise and to open the customer to the possibility that working with you can make a big difference. So how do you become a consultative salesperson? Many years ago, I learned this from a consultative salesperson. He said the hardest part of becoming a consultant is having the courage to call yourself a consultant. So after that, I began to practice these words. When I met with a client and I was selling financial services, investments, eventually real estate and other things, when I met with a client, I say, Mr. Prospect, please relax. I'm not here to sell you anything. I see myself more as a consultant than as a salesperson, and all I would like to do today is ask you some questions and see if we can't help you achieve your goals in a cost-effective way. Would that be okay? And always I found that people accept you at your own evaluation of yourself. If you tell the person you're a consultant, they accept you as a consultant. And then they wait to see if you perform as a consultant. And when you start to ask questions and take notes and ask follow-up questions and give the client lots of opportunity to talk about their problems and difficulties as they relate to your services, they see you as a consultant and they become wide open to accepting your advice. Now, if you want to become a consultative salesperson, you have to take action. So what is the one action that you can take immediately based on what we've just talked about in this session to become a more perceived consultant in every customer interaction? Please leave a comment below. And until next time, remember that you are गाइज आप लोगों को क्या समझ में आया? मुझे हर एक पर्सन से एटलीस्ट एक कमेंट चाहिए कि आपने क्या समझा इससे, तो चैट पे डालिए प्लीज कि क्या चीज आपको समझ में आई जो अभी ब्रायन ट्रेसी ने बोला, तो जो भी आपको अच्छा लगा या जो भी चीज समझ में आई, सो एटलीस्ट वन थिंग आई नीड फ्रॉम योर साइड. सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वीडियो? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो आधे घंटे की ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है ताकि आपको भी पता रहे कि दुनिया में क्या हो रहा है और लेटेस्ट सेल्स की टेक्निक्स हैं क्या. तो अभी हम वेट कर रहा हूँ आप सबकी चैट पे. हेलो. व्हाट एल्स गाइस, मेरे को सबसे ही चाहिए कुछ ना कुछ, तो मैं वेट कर रहा हूँ आप सबकी
Prashanta says to ask the right questions, gain confidence of the customer before suggesting a solution. We have to understand the customer's pain areas and provide the proper solution. Pravinder ji कह रहे हैं. Okay. Anyone else, guys? Pankaj, be involved and in sync with the customer perspective. Very good. Customer should feel confident with us. That's right, Shubham. Well done. What about Ramesh, Dheeraj, Sahib? Gopal? सर लिख रहा हूँ मैं. Okay. Customer should trust our solution with their pain areas. Very good. So trust is very important. We need to act as consultant who can solve this pain area. और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने बताई है वो एक ही चीज़ इन्होंने बार बार बताई है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने बताई है वो है आस्किंग द राइट क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है ना, और सुनना है बाकी टाइम. ठीक है, सॉल्यूशन देने से पहले क्वेश्चन पूछना चाहिए. ग्राहक खुद ही अपनी सेलिंग अपने आप को कर देता है. वो कंसल्टेंट जो है हजारों रुपए ले लेते हैं पर आवर, बट एक्चुअल में वो सिर्फ क्वेश्चन ही पूछ रहे होते हैं. सारी बात आप खुद ही कर रहे होते हो. ठीक है ना, आपको बाद में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ इसने बड़ी अच्छी चीजें पूछी, और लाइक अल्टीमेटली वो सबसे कम बोल रहा है. ठीक है, और आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने दिमाग में कर लेते हो. वेरी गुड रमेश. वी हैव टू प्रोवाइड द सोल्यूशन विद द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. तो इसी के अंदर एक और टेक्निक है. किसी को पता है स्पिन सेलिंग के बारे में? डज एनीवन हियर नो अबाउट स्पिन सेलिंग? डज एनीवन नो अबाउट स्पिन सेलिंग? नहीं है तो नो लिखो गाइस, मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा. यस या नो? तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. स्पिन सेलिंग सिखाऊंगा मैं आपको अच्छे से. परविंदर जी, आपको आइडिया है स्पिन सेलिंग के बारे में? नॉट एग्जैक्टली सर. ठीक है, तो आइए हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं इसका. तो नॉट टू वरी, आज की मीटिंग हम ज्यादा देर नहीं चलाएंगे, बट एक या दो वीडियो और करेंगे. इट्स एब्सोल्युटली फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, ओके. Today I'm going to talk to you about spin selling, the best questioning technique process I've ever come across. I've been using it for more than a decade. You're going to love it. So this is the technique for asking the questions. Okay, this is the technique. And these are world renowned techniques. तो आपको अगर नहीं पता है तो आपको सीखनी जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, बड़ी वैल्यू को कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए. Sir, I believe what I could understand is. अभी नहीं परविंदर जी, अभी वीडियो के बाद. ठीक है. Okay. All right, what's the challenge that most salespeople have? Well, the biggest one is that most of us don't understand the difference between a one-call sort of low-value sale versus one of those complex sales. If you're in the business where your customers have to interact with you, multiple times over, the course of maybe a week, 2 weeks, or even longer, you're in a complex sale environment. And sales has changed so much over the years, and people know, like I've said in some previous videos, they can smell when you're trying to sell to them. So today we're going to talk about spin selling. Now, spin selling has been around, it's by a guy named Neil Rackham. It's been around for since 1988, actually, and I have the book, and I've been using it for years, and I love the process of being able to go through these questioning techniques with potential clients. And you can use this in any industry that you're in. And spin really just stands for situation, problem, implication, and need payoff. And I'm going to go through those in detail in the blog post, so make sure you read through it and really go through it. It's a lot, well, I think it's a lot of fun.
So the different questions mean just sort of the different level of salesperson that you're going to be. The first one, the situational kind of question would be, tell me about the current situation that you're in, or tell me about what's going on in your business, or what type of a sales process do you use. So if it was me, I would say, can you explain to me the sales process that you use in your business? And that's what most salespeople do, is they ask those questions and they try and dig and they try and probe for information, which is sort of the old school way of doing it. As you start to go further into the discussion, you want to start asking problem questions. So if I'm asking, tell me about your sales process, and they explain to me what's going on, then I would ask a question like, so why is this causing you problems right now? Or what problems has this caused for you, right? So that's a problem question, and most salespeople that are good in those low volume or low value kind of sales are good at asking those kind of problem questions and digging deeper, and that's what probing is all about. And for most people, they'll be able to get by on those two levels of question. But really where the value is on the third and fourth level. So the first one is that implication question. You ask about a problem, they're going to tell you what that problem is, and there's always going to be some sort of an implied need. And when you're paying attention to that sales language, you'll be able to spot that implied need. And the question then becomes, what happens if you don't fix this problem? And you get them to explain to you how that problem sort of builds on itself. And it's the more you ask those implication kind of questions, the deeper that you can actually dig into your conversation. So if I was going to ask an implication question, I would say something like, what happens if you don't tighten up your sales process, or what happens if you don't start getting these conversions in order? So that's an implication question, getting your customer to start thinking about where would this go. And if they start telling you more implied needs, then you can actually dig further in those implications. The last one is the need payoff question. Now this is where you can really do some cool stuff with your customer. And the need payoff is, tell me what would happen if we increased your sales by, say, 25%. What would next year look like if you had another 25% in sales? Or what would another 10% more time freedom be for you? Or what would it look like if you had a 95% increase in your customer satisfaction ratings? Now you're talking about solutions rather than problems. And the beauty about this is that when you get your customers involved in explaining to you how a solution will solve their needs, you actually empower them to become sort of a mini salesperson for supporting your cause. And they become sort of evangelists for what you're trying to do, especially if they have to go and sell this idea to somebody else. As I mentioned in the blog post, the spouse factor, going home and talking to a husband, or talking to your wife, or going and having to talk to your boss, superior, or the management team. The need payoff question is really going to get them involved in coming up with a solution. And it doesn't necessarily mean that they're ready to buy your solution, just that a solution is in order. So those are the 4 types of questions that you can ask. And the better you get at asking the further ones, the problems, implication, and need payoff, the faster you're going to be able to succeed in some of these sales calls. So get good at asking those kind of questions. Remember that spin selling, when it was released, it was based on 12 years of research on 35,000 sales calls in all sorts of different complex sale environments. So this stuff is really rooted in science and in data, which I love, because they tested, and they found those gaps in the sales process. So in your sales process, make sure you're testing ideas. Make sure that you're testing what works and what doesn't, and start to work on asking those deeper questions. Most amateur salespeople stop at situation or even at problem because they haven't thought further about how to ask those questions. And then what do? We ask a couple situation questions, our customers get bored with that process, so we drop our marketing material in front of them and say, okay, well, let's look at our solution. That's completely what's losing so many sales today. So I hope this helps you guys out. Tomorrow I'm going to talk about an even more powerful sales technique called Okay, we just finished doing a training over here on the whiteboard all about spin selling. Now, spin selling is an old book that's from the 80s, and we're going to be talking about how to apply it today
in your sales process. Now, this is something I've been training on for many, many years, not just spin selling, but really about asking the best questions in your sales process, getting inside the mind of your customer. The only switch I'm going to make you think about today is not so much waiting to talk to your customers to ask these questions, but how do you spin sell them before you get in front of them? And so I've been training on this for many, many years. Thousands of people have taken some of these programs from me, from some of the questions guides, and this one specifically in the program that we just launched, so that we can help you build a better framework for asking questions. So let's jump in. If you're in sales, you need to know how to ask amazing questions. And what I'm going to be reviewing with you right now is spin selling. I've got the field books, I've got courses that I've built. All of my courses that talk about sales have some sort of element of how to ask questions. And I always refer back to this book, Spin Selling. Now, this book, when it came out in 1988, they reviewed about 88,000 sales calls and hundreds of companies and thousands of sales reps. And what they found was that by interviewing all of these salespeople and watching how they performed, they found that the highest performers did things dramatically different than the lower performers, even the second place finishers. And it was all about the questions that they asked. You see, back in the day, if you were just selling widgets, if you were doing highly transactional and low ticket items, the questions that you asked were a little bit different than as you started to go into complex selling. And they found that when they saw what these salespeople were doing, those ones outperformed usually 2 or 3 up to 10 times better than the ones that were in second place. Now I'm going to go through this, how this works and how you can apply it. Now, what I want you to think about before you do that, okay, I want you to stop and I want you to think about how we're going to apply it in today's selling environment, because it does you no good to go back and just ask a ton of questions to your clients. Your clients, your customers expect you to be more prepared now than ever before. And so what we want to do is say, okay, before we go out and just ask them a ton of questions, let's plan and spin sell those customers before we talk to them. Ask these questions of ourselves, of our customers, get in the mind of that customer so we can help them cognitively reframe how they think about themselves. If we get them to think differently about themselves, they will think differently about us. So let's show you what this looks like. So SPIN is really simple. It stands for situation, problem, implication, and need payoff. And I'm going to go through this with you. Basically, a situation question is, tell me about how you're doing this, or how many leads do you get, or when you do this, what happens there, so that you're trying to understand all of the ways that people make decisions and what's happening either in their business or in their life. A problem is, okay, so you told me about this thing that you're doing. How has that caused a problem? Are you seeing these problems happen because of that? Now, if you are an amateur or a new salesperson, most of the time, you're going to stop here because you're saying, okay, this is what's happening, this is the problem, here's how we go and solve it. That's solved. So that's normally what people would do. So they say, here's your problem, here's what we're going to do about it. Implication questions are basically you're trying to understand the cause and effect nature of their business. You're trying to say, okay, what if that happens? What else happens? Okay, who's involved? How does that work? Why would you make that decision? Then these things happen. So you're starting to see how things move in succession. Then the last one is a need payoff question, which is a lot more of a positive question, which is all about if you move forward with this, or if these things are in place, what's possible, okay? So when we look at these questions, here's what I want you to think about, is the implication questions are probably going to be your most important questions, and we are going to use an acronym here called BATCH, which stands for bottlenecks. What are the things that these problems are causing, and how are they holding back your business? Who are the other people that are affected because of what's happening, because of this problem? How much time does it take you to solve that problem? What are the costs that are involved to solve that problem? And how much of a pain in the butt is it to solve that problem? So if we start thinking about
how to ask our customers these questions, we move them through this framework. We say, tell me about your business. How many leads are you getting? How do you currently advertise? What happens when these things happen? Okay, so are you seeing that when you're trying to get those leads, are you finding that a problem arises by trying to manage all those leads and trying to juggle those leads? Okay, well, how does that affect your productivity, right? Who else has to be a part of this? How does that affect those people that are involved? How much time does it take you? How much time does it take them? How much does that cost you to solve that? It's not just about fixing that problem, but there's time, there's cost involved, and how much is that driving you insane? We start to understand this. What we're trying to do here, let's use green as the next one, is if we go and do this, where am I gonna put this? I like to, let's use green. We're gonna put green in the background here. But then they say, well, that is too expensive. Let me think about it. Come back to me in 6 months. What we have is good enough. By asking the implication questions, we are starting to stack challenges. We're starting them to reframe their thinking. We're starting to do enough of a conversation where they start to go, wow, I wasn't thinking about that, about my business. That makes sense. And your offer now is completely valuable to the issues that they have. If we don't help them surface these challenges, then we run the risk of them not buying. Now, once we've done this, we've asked these questions, then we're gonna go and say, okay, let's say you have a better system in place in 6 months. What's possible for you? Now they explain to you, well, if we had that system in place, or if we had that offer, or we ran that event, or my finances were in a better position, whatever it is that you're offering, and we've helped them understand this, they say, well, if I had that in place, now we'd be able to do this. If we had a 15% increase of those good things, now we would be able to spend more on these other things. Or if we decrease the issues that we had by 50%, that would allow us to spend more time and energy on this. That need payoff question is to get them to go vocalize what an opportunity looks like working with you. Now, this is why the top performing salespeople use these questions in the wild to say, tell me about your business, tell me about your problems, tell me about what's happening because of that, who's involved, how does it work, what goes on. Oh, okay, that makes sense. So what you're telling me are these things are going on, and if you found a way to do this, is that right? Okay, great. So tell me, if we were able to put those things in place, what does that look like for you? That's a sales conversation. Now, what I want you to do for today's market is have this conversation with yourself, pretending you're the customer. Write these questions down. Write down what they might say when you ask these questions. This is so valuable as an exercise that as you start to build out your offer, your branding, when you start to map out your customer, if you ask these questions of your customer, you'll get better insight into how they think, the challenges they have, how they make decisions, and what's possible if they buy from you, so that when you get in front of them, they feel like you're inside their head. Okay, so that gives you a pretty good overview of how spin selling works. What I want you to do is take this worksheet, this one right here, and the challenge that I see people having with this worksheet is that you just can't put yourself in your customer's shoes. So if you have that problem, maybe grab your husband, your wife, your dog, somebody, get in front of them and try and position put them as the customer and try and make this an activity that you guys do together. Sit in front of the mirror, talk to yourself. I do this all the time. In fact, I'm doing it right now. I'm just looking at this camera because I know you're over there. Do the same thing I'm doing at home to yourself in the camera. I don't know, but think about how you would ask these questions to a customer. And if you ask these questions to them, what might they say in these answers? Write down those answers. So write down, what would be a question I'd want to know about their situation? What kind of problems might they be having? If they're having those problems, what else is happening? And if we can solve those problems, what's possible? And that's what this is all about. So take this activity, run with it, fill this out, come up with your questions, and come up with the possible answers so you can prepare yourself to have better conversations and to build your contact strategy in a meaningful way. Go get it done. क्या आपको ये समझ में आया जो इन्होंने बताया? स्पिन समझ में आया? So what does S stand for?
Okay, what is the situation? Okay, what does P stand for? Okay, P stands for problem. And what does I stand for? What does I stand for? तो ज्यादातर लोग जो है वो एस और पी पे रुक जाते हैं और प्राइस बता देते हैं, राइट? और इसी वजह से जो इन्होंने अभी जो वीडियो में दिखाया, जो सबसे क्रिटिकल पार्ट मैं आपका दोबारा आपको दिखाना चाहूंगा, जो इन्होंने ये बनाया अभी, ये देखिए, लेट मी शो यू, इसको फिर से enlarge कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जो इस बंदे ने आपको ये दिखाया यहाँ पे कि व्हाट डज इम्प्लीकेशन क्वेश्चन डू, ओके, तो मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि वो कहते हैं कि भाई जो बेसिकली वो मेजर करता है कि उसको क्या वैल्यू मिल रही है और उसे कितने पैसे देने हैं। तो ये इम्प्लीकेशन क्वेश्चन से कि क्या बॉटल नेक्स है, इससे कैसे औरों को इफेक्ट होगा, क्या टाइम पे फर्क पड़ेगा, कॉस्ट पे और हैसल्स पे, तो ये वैल्यू को बढ़ा देता है। तो जो इम्प्लीकेशन क्वेश्चन है कि अगर आपने नहीं किया प्रॉब्लम को सॉल्व या ये चीज की जगह में ये ले लिया तो क्या क्या और इशू होने वाले हैं, तो इम्प्लीकेशन जो है उस वैल्यू को बढ़ा देता है ताकि उसको फिर प्राइस जो है जस्टिफाइड लगता है। अगर आप इम्प्लीकेशन क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो होगा क्या कि बेसिकली जो पर्सन है, ओके, तो जो पर्सन है वो बेसिकली प्राइस को मानेगा कि प्राइस ज्यादा है, ये तो मैं आपसे क्यों लूं। तो इम्प्लीकेशन क्वेश्चन बेसिकली वैल्यू को बढ़ाते हैं, ओके, तो वेरी वेरी क्रिटिकल। एंड एन इज फॉर नीड पे ऑफ, ओके, तो एन इज फॉर नीड पे ऑफ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ लोग एस और पी पे रुक जाते हैं, एस और पी पे नहीं रुकना आपको। क्या करना है आपको, अगेन इम्प्लीकेशन क्वेश्चन भी पूछने हैं और नीड पे ऑफ क्वेश्चन भी पूछना है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज मैं ना ये जो ट्रेनिंग है मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। एक ट्रेनिंग और मैंने सेलेक्ट, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले प्रोडक्ट को तैयार कर देते हैं, सेल्स अपने आप बढ़ जाता है। लीडरशिप फनल में भी एक ये और मैं वीडियो चला रहा हूँ, तो अगर इनकेस कोई जाना चाहे तो जा भी सकता है, बट लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये 8 मिनट की वीडियो है, ये आप और देखें, उसके बाद हम लोग इसको बंद करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट पे रहता है पीएचपी फार्मूला। मैं वो पीएचपी फार्मूला पे फोकस इसलिए करता हूं क्योंकि दुनिया के सारे बड़े अच्छे ब्रांड्स जो जमीन से शुरू होकर ऊपर तक गए हैं, फर्श से अर्श तक, ये वो हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले प्रोडक्ट को तैयार कर देते हैं, सेल्स अपने आप बढ़ जाती है। बहरहाल आज का टॉपिक मैं लूंगा कि वो 4 क्या कारण हैं जिनकी वजह से आप सेल्स में या तो असफल हो गए हैं या बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाए। चाहे आप किसी भी प्रकार की सेल्स कर रहे हैं, आप B2B सेल्स कर रहे हैं, B2C कर रहे हैं या B2B2C कर रहे हैं, इन पे मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं, या आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग की सेल्स कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप इंटरनेट बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग से भी सेल्स कर रहे हो। किसी भी प्रकार की सेल्स में वो 4 क्या कारण है जिनसे आपको बड़ा फेलियर आपके हाथ लगता है। पहला कारण, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। वन मोर टाइम, कम ऑन, क्या? पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। ये कोर बिलीफ बनाइए। मैं थोड़ा हिंदी में इसका अर्थ समझा देता हूं। किसी भी आदमी को अच्छा नहीं लगता कि उसको कोई आकर के चालाकी से कुछ बेच के चला जाए। ये दुनिया में किसी को, इस बात को दिमाग में छाप लीजिए, इस बात को ना किसी तरीके से अपनी कंपनी में, अपने लोगों में घुसा दीजिए कि पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लाइक टू बी हेल्प। थोड़ा कड़वा और कठोर उदाहरण दूं, यू डोंट गेट मैरिड टू अ टोटल स्ट्रेंजर, you don't give a French kiss to a total stranger, you don't sleep on bed with a total stranger। जो आदमी पहली बारी मिला उसके साथ आप बड़े डिसीजंस कभी नहीं ले सकती हैं, राइट? वुड यू एग्री विद मी? देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे ही अगर जो आदमी पहली बारी मिला वो भी माल बेचने की कोशिश करता है, और जो लड़का लड़की से पहली बारी मिला, पहली बारी मिलते ही बहुत फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश करता है, दोनों लोग एक जैसे डेस्परेट नजर आते हैं। जबरदस्ती माल बेचता है जो पहली बारी में, वो भी डेस्परेट नजर आता है। जबरदस्ती एक लड़की के साथ उसको तंग करने की कोशिश करता है, फिजिकल इंटीमेसी दिखाने की कोशिश करता है, वो भी डेस्परेट नजर आता है। ऐसे डेस्परेट लोगों को देख के लोग गायब होना चाहते हैं, कटना चाहते हैं, पसंद नहीं करते। इसीलिए कस्टमर को माल मत बेचो, मदद करो। कम ऑन, माल मत बेचो, मदद करो। कस्टमर की पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करा दो या आगे का गोल अचीव करा दो, 2 चीजें पकड़ लीजिए। कम ऑन, कस्टमर की पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करा दो या उसका गोल अचीव करा दो। मान लीजिए आपने डिसाइड कर भी लिया कि मैं बेचू नहीं बनूंगा, मैं सेलू नहीं बनूंगा, जबरदस्ती सेल्स नहीं करूंगा, जबरदस्ती कन्विंस नहीं करूंगा, लोगों की हेल्प करूंगा। अगर आपने ये डिसाइड कर भी लिया तो भी नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट आता है आपके देखने के लिए, जो गलती बहुत होती है, व्हेन यू डोंट डिग डीप इनफ। कम ऑन, क्या? When you don't dig deep enough। आप जबरदस्ती मदद नहीं कर सकते किसी की, पहले आपको जानना पड़ेगा उसको मदद चाहिए क्या। एक बार कुछ बच्चे क्लास में लेट पहुंचे, मास्टर जी बोले, अरे बच्चों लेट काहे हो गए? अरे मास्टर जी, वो बूढ़ी औरत को सड़क पार करा रहे थे
अबे तो आधा घंटा लेट कैसे हो गए? मास्टर जी वो सड़क पार करने को मान नहीं रही थी। जबरदस्ती कस्टमर को गलत सड़क पार मत कराओ। कस्टमर की मदद करनी है तो पहले जानो उसको मदद चाहिए क्या है। प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटिंग और पोजिशनिंग करने से पहले उसकी नीड ढूंढिए और नीड को हेल्प में कन्वर्ट करिए। प्रोडक्ट तो बाद में आता है जी, प्रोडक्ट पहले नहीं आता पिक्चर के अंदर। पहले उसकी नीड आती है, फिर आप सोचते हो कि मैं इस नीड में इसकी कैसे हेल्प करूं। उसको बोलते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग। कंसल्टेटिव सेलिंग का मतलब क्या? पहले कंसल्ट करोगे सामने वाले से, उससे पहले कुछ चर्चा करोगे, समझोगे उसको चाहिए क्या है, उसके बाद। तो पहला स्टेप क्या था? पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। दूसरा स्टेप क्या है? यू डिड नॉट डिग डीप इनफ। इसमें आपने उसका नीड भी जान लिया, उसका वांट भी जान लिया, उसका गोल भी जान लिया, उसका प्रॉब्लम भी जान लिया। अब आप प्रोडक्ट देने की जैसी कोशिश करेंगे। तीसरे स्टेप में ध्यान दीजिए, कहीं गलती ना हो जाए। इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई और KDM। KDM का मतलब क्या है? की डिसीजन मेकर। जिसको आप माल बेच रहे हैं उसके पास डिसीजन लेने की एबिलिटी है भी कि नहीं है। कई बार यू आर टॉकिंग टू अ रॉन्ग पर्सन। आप गलत आदमी के साथ दीवार पे धक्का लगा रहे। दीवार पे धक्का नहीं लगाते, दरवाजे पे लगाते। देखिए 5 तरह के लोग होते हैं जो आपका माल खरीदते। इनिशिएटर, दूसरा इन्फ्लुएंसर, तीसरा डिसाइडर, ये डिसीजन लेता है, और चौथा बायर, ये खरीद के आता है, पांचवा कंज्यूमर जो बाद में यूज करता है उस प्रोडक्ट को। अब 5 प्रकार के लोगों में आप टारगेट किसको कर रहे हैं और आपके बिजनेस में किसको टारगेट करना जरूरी है। मान लीजिए आपका कंज्यूमर बहुत ही छोटा बच्चा है तो बच्चे को टारगेट मत करिए, डिसाइडर को, बायर को, इनको टारगेट करिए, क्योंकि ये लोग आपका माल खरीदेंगे। अब एक कॉर्पोरेट के अंदर B2B में परचेज मैनेजर आपका बायर है, लेकिन ना तो वो इन्फ्लुएंसर है ना वो डिसाइडर है। डिसाइडर उनका बॉस है जो ऊपर से उनको बताता है काम करने के लिए। ऐसे ही आप अपना KDM, की डिसीजन मेकर ढूंढिए। सास भी आई है, बहू भी आई है, ननद भी आई है। वो देखता है इनका सेक्रेटरी, PA, वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावरफुल होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर घुसना पड़ता है, आपको कस्टमर को पहचानना पड़ता है कि इनमें डिसीजन मेकर कौन है। अरे साड़ी बेचने वाला भी जब साड़ी बेचता है ना तो वो देखता है सास भी आई है, बहू भी आई है, ननद भी आई है। वो देखता है यहाँ चलती किसकी है। सास की ज्यादा चल रही है, बहू की ज्यादा चल रही है, ननद की ज्यादा चल रही है। जिसकी चल रही है फिर साड़ी उसके आगे रख देता है। आप बताइए कौन सी ठीक है, उसको मालूम है ये डिसीजन ले लेगी, माल तुरंत बिक जाएगा। इस तरह अपना प्रोबेबल कस्टमर, प्रोबेबल परचेजर फाइनलाइज करिए। ये प्रोबेबल कस्टमर क्या होता है? अगर आपने हार्ले डेविडसन बेचनी है, डेविडसन बेचने के लिए कम समय में ज्यादा लोगों को दिखाओ तो क्या करो? अब मुंबई में धारावी है, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, वहां जाके ले जाओ। बहुत सारे लोग आपकी एक ही बार में बाइक देख लेंगे, हार्ले डेविडसन, वो देखेंगे भी ऐसे कि पता नहीं क्या आ गया है। थोड़ी देर बाद बाइक का खाली टायर बचेगा, हो सकता है कई चीजें गायब हो जाएं उसमें से। अरे वो आपका परचेजर है ही नहीं। समराइज कर देते हैं जी क्विकली, चौथे स्टेप जो आने वाला है उससे पहले। मान लीजिए आपने पहले 3 स्टेप ठीक कर लिए। आपने सामने वाले को बेचने की जगह मदद करा, उसकी नीड एनालिसिस कर लिया, आपने गहरा खोद के समझ लिया कंसल्टेटिव अप्रोच से कि उसकी एक्चुअल जरूरत क्या थी, और डिसीजन मेकर भी मिल गया। लेकिन आपको सामने वाले के बजट का पता ही नहीं, अनक्लियर अबाउट द बजट ब्रैकेट। ये भी बड़ा डेंजरस है सर। कुछ लोग ऐसे होंगे वो ना तो पैसा खर्च कर सकते हैं ना पैसा खर्च करना चाहते हैं। एकदम बाहर कर दो उनको अपने चैप्टर से। कुछ ऐसे हैं जो पैसा खर्च कर सकते हैं और करना चाहते भी हैं। ये आपका परफेक्ट कस्टमर है, इसको एकदम ओके कर दो। अब बीच के बचे 2, एक वो जो खर्च कर सकते हैं लेकिन चाहते नहीं है जी, तो उनको आपको ना, अभी तक इसका मतलब नीड एनालिसिस ठीक नहीं हुआ, वो कस्टमर आपसे कनेक्ट ही नहीं हुआ, उसके बाद पैसा है लेकिन खर्च करना नहीं चाहता। उसका यही कारण है कि अभी तक आपने डिग डीप करके उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझा। एक और बचा, ये क्या है जी? ये खरीदना तो चाहता है लेकिन उसके बाद पैसा है नहीं। तो इसके साथ आप बैठ के मदद करें कि कहाँ से फाइनेंस मिलेगा, इसको किधर से लोन मिलेगा, कोई EMI की स्कीम आ जाएगी, कोई पार्टनर स्कीम आ जाएगी जिससे वो खरीद लेगा। आपको सामने के बजट ब्रैकेट को समझना पड़ेगा। 4 कैटेगरी थी, जो पैसा खर्च कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता, करना चाहता है लेकिन पैसा है नहीं, ना करना चाहता है ना है और करना भी चाहता है। तो 4 प्रकार की कैटेगरी थी। इन कैटेगरी से आप बजट ब्रैकेट आइडेंटिफाई करिए। ये 4 गलती मत करिए, सेल्स तुरंत बढ़ेगी। यकीन मानिए सेल्स करना दुनिया का सबसे आसान काम है अगर आपको समझ में आ जाए करना कैसे है।
क्या आपने लीडरशिप फनल के ग्रेजुएशन सेरेमनी के वीडियोस देखे थे? अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए। अब तो कई ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं लीडरशिप फनल से। हम हजारों लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग बना चुके हैं, उनके सेल्स के मॉडल बदल चुके हैं। मैं 10 सेल्स के पावरफुल मॉडल्स एक्सप्लेन करता हूं इसी लीडरशिप फनल प्रोग्राम में। अगर फिर भी आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक काम करिए, मैं आपकी काउंसलर के साथ में फ्री कॉल का कमिटमेंट है, इसी नंबर पर फोन करिए और बोलिए मैं बिजनेस काउंसलर से बात करना चाहता हूं। आप उनको अपने बिजनेस की सारी प्रॉब्लम बताइए और समझिए कि क्या वो उसको सॉल्व कर सकते हैं और वो आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे लीडरशिप फनल आपकी मदद करेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर। So guys, this is Dr. Vivek Bindra. इनके और भी वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, so you'll be happy to know कि that we have tied up with Dr. Vivek Bindra. ओके तो बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा, मैं डायरेक्टली मिलवा दूंगा आपको सीधा डीवीबी से। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। सो लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। तो गाइस कोई और क्वेश्चन या कमेंट्स तो नहीं है? No, sir, it's fine. ठीक है, तो आई होप यू लाइक द ट्रेनिंग। थोड़ा सा ना स्पिन सेलिंग के बारे में एक बार आप भी देख लेना यूट्यूब के ऊपर, और इसी प्रोसेस को आप फॉलो करने की कोशिश करो। ओके जी सर। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you, sir. ओके सर। ओके ओके ओके, बाय 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 बाय।